Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you guys are doing well today. In this video, I would like to touch upon the most important tips that you need to follow in order to score high in your IELTS exam. Um, Tips are simple, but let me start from the scratch. कि स्पीकिंग पार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, राइट? और ये मैं आपको जो है ना आइल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखें पार्ट 1 पार्ट 2, राइट, और अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो ये आपका पार्ट 1, इसको क्लियरली यू कैन सी दैट पार्ट 1 इज़ अबाउट 4 to 5 minutes conversation with an IELTS examiner about yourself. Topics might include work, family, home life, personal interests. आपके वर्क के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, आपको होम लाइफ के बारे में आपसे पूछा, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। पार्ट 2 इज़ अबाउट यू विल बी गिवन अ कार्ड जिसको क्यू कार्ड कहते हैं विद अ टॉपिक एंड यू विल बी गिवन 1 minute टू प्रिपेयर or to take notes on the topic, and then will be given a pencil and paper to prepare your response. You will then speak on the topic for 2 minutes. ठीक है, 1 minute आपको प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा और फिर आपसे 2 मिनट में जो आप उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में क्या होता है, you will have a conversation with the IELTS examiner around the topic given in part 2, discussing in more detail. Part 3 should take approximately 4 to 5 minutes to complete. ठीक है, अब हम आते हैं इधर डोंट मेमोराइज आंसर्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये होता है ना, बाज़ लोग चीज़ों को रट्टा लगा के आगे जाते हैं ना। Memorized language doesn't give the examiner an accurate measure of English language skills. The examiner will be able to tell if you have memorized your answers, and this may influence your final band score, right? अक्सर लोग phrases जो है, हाँ अलबत्ता इस तरह कुछ ख़ास phrases हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। वो phrasal verbs हैं, idioms हैं, that are useful, उसमें आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि आपकी सारी लैंग्वेज ही नेचुरल ना हो और आप सिर्फ रट्टे जो है ना वो करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपका डोंट यूज़ बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत सारे जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करूँगा तो इट मीन्स कि मेरा बैंड स्कोर जो है वो अच्छा आएगा। नो, दैट्स नॉट द केस, right? So as you can see, you may want to impress the examiner with a bit of complex words in your speaking test, but to be safe, avoid using words you're not familiar with. There is a higher chances of making mistakes by either mispronouncing words or using them in the wrong context. Makes mistakes can affect your final band, right? So common words use करें जो समझ में आती हो, right? यूज़ अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये तो मैं पहले वीडियो में बता चुका था इन राइटिंग में कि आपने फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस मतलब फ्लुएंट हो, नेचुरल हो। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है कि द चॉइस ऑफ वोकेबलरी, ठीक है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी हो, ठीक है, मतलब ये कि आपको डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स का पता हो। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, आई डू लाइक स्विमिंग एंड, या उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें, आई हैव बीन स्विमिंग या आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ स्विमिंग सिंस लास्ट 5 years। तो इसका मतलब है कि आपने स्विच किया फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस टू
present perfect continuous tense, right? Don't worry about your accent. अक्सर लोग ये समझते हैं कि accent, लेकिन accent doesn't matter, fluency does. ठीक है. Tip number 5, pause to think, right? और अपनी जो phrases हैं वो इस तरह, जब वो आपसे पूछता है ना कि what do you think, आप बोले कि that's an interesting question, right? I have never thought about that, right? अब आपको किसी आंसर का प्रॉम्प्ट जवाब नहीं आपको आता, तो आप इस किस्म के फ्रेजेस या इस तरह की क्लॉजेस से, सेंटेंसेस से आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? लाइक दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, बट लेट मी सी, right? These kind of phrases will fill the gap for you, just in case you don't have a immediate response for that question, or you don't have any idea about that question. So you need to have these filling sentences in order to utilize the time. After all, you have to speak. वो स्पीकिंग अब ये बता दे कि यार मुझे इसके बारे में नहीं पता, इस टॉपिक के बारे में मेरा ब्रदर जो है या मेरी सिस्टर जो है या कोई भी मेरी फैमिली में, उसको शायद इसके बारे में नॉलेज होगा, और नॉलेज है तो मैं एक दफ़ा उससे सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था इसके बारे में कि टॉपिक जो है साइंस से रिलेटेड जो भी, ठीक है. So that's a difficult question, but I'll try and answer it. Even if the question is difficult, you should answer. Well, some people say that it's the case. However, I think is तरह की phrases. Let me think about the for a minute. ठीक है. Tip number 6 में क्या है? Avoid using fillers. Avoid using the following, like well, yeah. ठीक है. Number 7, extend your answers. इसको हम कहते हैं elaborate your answers. ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछे कि do you like swimming? Yes, I do. बस बात ख़त्म. No, 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 no. आपको expand करना है अपने answers को properly. Yes, I do. I'm a big fan of, किसी swimmer का नाम ले ले आप. And I've been swimming since last 4 years. I think it's very good for your mental and physical health. It's very good for your body, physique and everything. It keeps you fit. That's why, isko kehte hain elaborate or extend your answers. Like smiling helps pronunciation. Smiling can help calm your nerve. Smile karo अच्छे तरीके से. Don't speak in a monotone. Monotone का मतलब ये होता है कि you should have, don't speak in a monotone कि बाद लोग ऐसे शुरू हो जाते हैं ना, वो दूसरों को मौका भी नहीं देते. That's a bad thing. A flat sound with little variation, थोड़े से pause लो, pitch variations हो, ठीक है. Don't speak in monotone. Vary the stress and intonation to add emphasis. किसी चीज़ के ऊपर stress देना हो, कुछ words के ऊपर stress दो, कुछ के ऊपर ना दो, कुछ को इसी तरह smoothly बोलो. Practice common IELTS topics. और ये जो है ये last tip है. IELTS topic को tourism and travel, education, transport, ठीक है, फैमिली लाइफ, ये सारी क्राइम, पनिशमेंट, द इंटरनेट, एडवर्टाइजिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, 8 मिनट की, लेकिन ये है कि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की है जो कि आपको ज़रूरत है आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए स्पीकिंग में, राइट. और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें. प्लीज़ कमेंट में बता दें कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो. And also tell me, share it with your friends as well. Thank you very much.